पर एक स्टूडेंट है जो शांत उधर देख रहा है, उधर 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 देख रहा है ना, इधर देख रहा है ना। तो ये जो स्टूडेंट है यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर हमें क्या समझना होता है, यहाँ पर हमें क्या समझना होता है, व्हाट टू अंडरस्टैंड हियर। सो इसके माइंड में क्या क्या आएगा, क्या क्या सवाल आएगा, है कि क्या क्या सवाल आएगा, इसके सवाल को अपन रिजॉल्व करेंगे। अपन का टारगेट होगा इनके मन में इस चैप्टर का नाम देख करके जो जो सवाल आए उसके सवाल को रिजॉल्व करना। इसके लिए अपन को टाइम लगेगा, बट ओके वी आंसर ऑल क्वेश्चंस। ओके, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्यों मेजर करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है ना, हमें मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम क्या कर पाए, डेली लाइफ में चीज़ों को इजी कर पाए। ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस। ओके, वी ट्राई टू मेजर द थिंग्स। ओके, वी मेजर एवरीथिंग, वी मेजर मास, वी मेजर लेंथ, ओके, वी मेजर करंट। ओके, तो हमें मेजर करना होता है सो दैट ओके वी कैन इजीली कैलकुलेट द आवर नेसेसिटी थिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। ओके, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को कैलकुलेट कर पाए जो भी चीज़ की हमें क्या है जरूरत हो। सपोज if I'm asking you for 1 meter of clothes, okay, so you can easily measure by 1 meter scale and you can give me 1 meter of clothes. Okay, if I'm asking you give me 100 centimeter of clothes, so you can use centimeter scale and you can give me. Okay, I'm asking you okay for 100 millimeter, 10 millimeter, so you can use millimeter scale and you can give me whatever I'm asking for. But if I ask you give me 1 meter of sugar, so can you give me 1 meter of sugar? क्या ये पॉसिबल है कि आप मुझे 1 मीटर शुगर दे दो? सो नहीं। तो यहीं पर मेजरमेंट की अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए होती है कि हम क्या कहाँ पर हम उसको किस तरीके से यूज़ करें। सिर्फ इतनी सी बात होती है और कोई बड़ी बात नहीं होती है कि हाउ टू यूज़, वेयर टू यूज़, हाउ टू यूज़, किसको, मेजरमेंट को, किसको, कॉन्सेप्ट्स को। जो सर्टेन रूल्स हमने इंटरनेशनली बना रखा है इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम के थ्रू। ओके, उस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई सिस्टम को, ओके, सीजीएस सिस्टम को, एफपीएस सिस्टम को, एमकेएस सिस्टम को, जो भी सिस्टम हम यूज़ करना चाहते हैं उसके सर्टेन रूल्स को अपन देखते हैं, फिर उसको फॉलो करते हुए हम उस सिस्टम के मेजरमेंट को फॉलो करते हैं। तो पहली बात ये समझ में आई कि हम मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है? लाइफ में जो हम यूज़ हो रही है चीज़ों को उनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला हमारा मकसद क्या होता है, वाई मेजरमेंट। ओके, मैंने इसको मिटा क्यों दिया, मैंने इसको मिटा दिया क्या, चलो मिटा दिया तो मिटा ही दिया। ओके, सो अब ओके यहाँ पर लिखता हूँ वाई मेजरमेंट। ओके, इसका आंसर, पहला आंसर क्या होगा, टू सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई। ओके, क्योंकि अपन क्या करना चाह रहे हैं, सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। दूसरा आंसर क्या करना चाह रहे हैं कि किसको किससे मेजर करना है, whom to which। ओके, और which to whom। ओके, तो whom to which और which to whom, किससे किसको मेजर करना है, यस और नो। सो इंटर कन्वर्जन, बेसिकली वी कैन से आई एम टॉकिंग अबाउट इंटर कन्वर्जन। ओके, हमें पता होना चाहिए इंटर कन्वर्जन, पता होना चाहिए। वी शुड नो इंटर कन्वर्जन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर कन्वर्जन, कैन यू एनीवन एक्सप्लेन। इफ आई विल आस्क यू कि 1 kg को तुम क्या करो, कन्वर्ट करो ग्राम में, तो तुम इसको कह सकते हो कि ये क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमको कहूँ कि 1 kg को मीटर में कन्वर्ट करो, कोई भी है जो कन्वर्ट कर सकता है, बोलो। 1 kg को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, बोलो। अगर हमने कहा 1 एम्पियर, तो इसको मैंने कहा कि इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करो, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करो, और इसको किलो एम्पियर में कन्वर्ट करो। ओके, किलो एम्पियर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ये अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी, जब मेरी बातें को तुम सुन रहे हो और उसको अप्लाई करोगे। ओके, हाउ टू अप्लाई, कि हम 1 kg को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी नहीं को जानने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना होता है। बातें समझ में आए तो बोलो सबको भाई, बातें अगर सबको अच्छे से समझ में आया क्लियरली तो बोलो भाई, अच्छे से बोलना हाँ या ना। ओके, यस और नो, यस और नो, अरे बोलो, ठीक है। तो इसको अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये एक चीज समझ में आता है आपको, ठीक है। एम्पियर है तो ये मिली एम्पियर कितना हो जाता है भाई, 1000 मिली एम्पियर हो जाएगा, 1000 मिली एम्पियर हो जाएगा। इसी को अपन क्या लिखते हैं, 10 पावर 3 मिली एम्पियर लिखते हैं। इसी को अपन क्या लिखते हैं भाई,
10 पावर 3 मिली एम्पेयर लिखते हैं। लेकिन 1 एम्पेयर को तुम किलो एम्पेयर में लिख सकते हो क्या? तो बेसिकली हम लिख सकते हैं, को यहाँ पर किलो का मतलब बेसिकली हम बात करना चाह रहे हैं 1000, ओके। लेकिन क्या किलो है कि नहीं। इफ आई विल से 1 किलो, सो फिर यहाँ पर मिली के लिए भी अपन ने यूज किया। अच्छा ये मिली एम्पेयर है, तो चलो तो ये एम्पेयर, तो ये भी सही है तुम्हारा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे किलो एम्पेयर, नो सेंस। बट हाँ, किलो का एक जनरल सेंस हमें दिमाग में होना चाहिए। किलो का मतलब क्या होता है, 1 kg मीन्स 1000, समथिंग लाइक दिस माइंड में हिट करना चाहिए, ओके। से किलोवाट कह दिया, जैसे इफ आई एम सेइंग 1 किलोवाट kW, then what does it mean? Okay, 1000 of watt, okay. So if I am talking about power, so we can use kilo, yes or no? If I am talking about power, so power, so if I am talking about power, so we can use kilo। बोलो समझ में आता है सबको? तो अगर अपन पावर के बारे में बात करें तो अपन किलो यूज कर सकते हैं। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट किलो एम्पियर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पियर, सो शुड आई यूज किलो? आंसर है नहीं, किलो का यूज मोस्टली अपन नहीं करते। बोलो समझ में आता है सबको? सो अपन एसआई सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है, ये इंटरनेशनल सिस्टम जिसको अपन फॉलो करते हैं। पैरेलली अपन सीजीएस सिस्टम को ही फॉलो करेंगे, ओके। तो पहले अपन सीजीएस को देखें। सीजीएस में अपन को क्या देगा, ये क्या है, सी से क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। सी से क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। सी से क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। जी से क्या होता है, ग्राम होता है। जी से क्या होता है, ग्राम होता है। एस से क्या होता है, सेकेंड होता है। एस से क्या होता है, सेकेंड होता है। सेंटीमीटर किसके लिए है, लेंथ के लिए होता है, ठीक है। ग्राम किसके लिए होता है भाई, ग्राम किसके लिए होता है भाई, ओके। ग्राम इज फॉर मास, ठीक है। सेकेंड किसके लिए होता है, टाइम, दिस इज फॉर टाइम, ओके। यहाँ से सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड, ठीक है भाई। ये तुम्हारे पास एस किसके लिए आ जाता है, सेकेंड के लिए आ जाता है, ठीक है। सो सेंटीमीटर फॉर लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, ओके। लेंथ, मास, टाइम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसी को जब अपन एसआई में यूज करते हैं भाई, इसी को जब अपन एसआई में यूज करते हैं तो सेंटीमीटर क्या हो जाता है, बताओ। सेंटीमीटर क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है भाई। सेंटीमीटर क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। और ग्राम क्या हो जाता है, किलोग्राम हो जाता है। ग्राम क्या हो जाता है, किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। और सेकेंड क्या होता है, सेकेंड ही रहता है, ठीक है। सेकेंड क्या रहता है, सेकेंड ही रहता है। So there is no change in second. There is no change in second. Okay, centimeter goes to meter, gram goes to kilogram, second is second only. Okay, so if I'm talking about centimeter to meters, if you are converting centimeter to meter means 100 centimeter. 100 centimeter is what, 1 meter. So this interconversion, okay, need to know. Okay, you should know this interconversion. 100 centimeter equal to 1 meter. और basically can I say from here कि 1 centimeter क्या होता है हमारे पास, 10 to the power -2 मीटर होता है, ठीक है। बोलो समझ में आया भाई सबको, बोलो भाई सबको समझ में आया भाई। अब देखो 1 ग्राम क्या होता है, 1 ग्राम, यहाँ पर देखो 1 ग्राम क्या होता है हमारे पास, 1 ग्राम क्या होता है हमारे पास, 1 मैं क्या लिख रहा हूँ बताओ, रॉन्ग लिख रहा हूँ मैं। ये क्या होगा, तो मैं पहले ये लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने ये सही लिखा कि नहीं भाई, अच्छा मैंने इसको देखा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिखा है, ठीक है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट पहले वैसे 1 ग्राम इक्वल टू ये क्या होगा, 10 पावर -3 kg होगा, ठीक है। तो पहले अपन डायरेक्ट लिखते हैं, फिर अपन उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, 1000 ग्राम क्या होता है, 1 kg होता है, ये सही है ना। तो 1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम क्या होगा, कौन बताएगा, ये होता है 10 पावर -3 kg होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में रखना है। और सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड ही होता है। सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड ही होता है। बोलो सबको समझ में आता है मेरी चीजें, तो बोलो भाई सबको अच्छे से चीजें समझ में आ गई तो बोल दो भाई, ठीक है।
बेसिकली अपन ने क्या कहा, ओके बेसिकली अपन ने क्या कहा, अपन ने एसआई सिस्टम में मास को अपन किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में करते हैं मेजर, ठीक है, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मास को आपको किस चीज़ में कन्वर्ट करना होता है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, और टाइम सेकेंड है तो आपका सेकेंड ही रहता है, ठीक है, और लेंथ को आपको मीटर में मेजर करना होता है, ठीक है, लेंथ को आपको क्या करना होता है, मीटर में मेजर करना होता है। ये किसकी बात में कर रहा हूँ, एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सीजीएस सिस्टम में आपके पास क्या होता है, लेंथ की जगह पर सेंटीमीटर आ जाता है, मास की जगह पे क्या आ जाता है, मास की जगह पे क्या आ जाता है, ग्राम आ जाएगा, ठीक है, मास की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ओके। एंड इन प्लेस ऑफ टाइम देयर विल बी सेकंड, सो हियर इज आल्सो सेकंड एंड देयर इज आल्सो सेकंड, सो देयर इज नो चेंजेस इन टाइम, ओके, no changes in time, so basically no changes in time in any, okay, unit. We are using time as a second only, okay, that's the basic preferred unit, okay. So there is one conversion you should know always, okay. So whatever I had written over here, you should know each and everything without any doubt, okay. One more thing I'm adding up here, suppose if I'm talking about length, now if I'm talking about length, तो लेंथ में एक चीज क्या है, आपको 1 किलोमीटर पता होना चाहिए, है ना, 1 किलोमीटर कितना होता है सबको पता है, कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। 1 किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, व्हाट मीटर, ओके, 1000 मीटर, ठीक है। तो इसमें कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, कैन एनीबडी से, कैन एनीवन से, सो 1000 इंटू 100, देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, बोलो 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 भाई, सबको समझ में आया। ये देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 पावर 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये क्या है, 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर को ऐसे लिखते हैं, 1 km इक्वल्स टू, यहाँ से अब मैं सारा लिख देता हूँ, 1000 मीटर इक्वल्स टू 10 पावर 5 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम हियर कैन यू से 1 मीटर इक्वल्स टू 10 पावर -3 किलोमीटर, इफ नेसेसरी यू कैन यूज इट डायरेक्टली, बोलो। And if I'm talking about 10 power 5 centimeters, so from there 10 power 5 centimeters, if I will ask you from there what is 1 centimeter, can anybody say over here? This was 10 power 5 minus 5 centimeter, okay, so 1 meter equals to 10 power minus of 3 kilometer, 1 centimeter is 10 power minus of 5 centimeter. Hey, मैंने क्या लिखा, what is I'm writing, this is kilometer only, okay, am I right, this is kilometer, am I right? So can anybody tell, all the concepts clear to all of you, yes or no, yes or no, everybody please. Everybody pay attention over here, tell me. And one more thing I'm adding up here, one more thing I'm adding up here, so adding up, okay, so right here, adding up is, okay, so adding up is our new title, adding up. So adding up is here, and here is one student is standing here, is good enough, one student is standing here and one is adding up is here, okay, both are good, both are good, both are good, both are awesome, both are amazing, yeah. So come on, so what I'm saying here, 1 kilometer is 1000 meter, these are basic things you should know, okay, if you want to play with questions, so if you want to play on good levels, so if you want to score good scores, you should focus on basics, basic very important, okay. So what we do, we go to concept directly, but we don't know all these things, so it creates problem issue during calculation. So I observe the students are not facing not doing calculation rapidly. What's the problem behind it? Because they don't know the basics, things they didn't work with basics. So once you will work with basic, definitely you can do better, your calculation will be faster, so definitely you can score best there, okay. So one student is studying what this student is thinking about unit and dimension, this student thinking about unit and dimension. So what's thinking goes in the mind of this student, what things goes in the mind of this student about all this, about wordings, so we are adding up, फालतू का बकवास चल रहा है, बोलो। So this is okay भाई, हाँ ना। So one more thing I have to add up over here, one more thing I have to add up over here is that meter, centimeter, okay, yeah. So if I'm saying 1 meter equals to 100 centimeter equals to how much millimeter, can anybody say here, can anyone say how much, okay, millimeter, can I say this one is 1000 of millimeter, bolo bhai, am I right to everyone, am I right to everyone? So can I say 1 meter equals to 100 centimeter equals to 1000 of millimeter. So if this is over here, so from here can I say 1 millimeter is what, 1 millimeter is what, 10 power of -3 meter, this is one thing, am I right to all of you, tell me everybody. And another thing is that from here can I say 1 centimeter is what, 10 power -2 meter, 10 power -2 meter, 10 power -2 meter, bold. Everyone clear, everyone clear, 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 clear. Is it clear? So now this is student standing here, this is student thinking about this chapter, adding up, I'm helping this student to adding up all this concept,
Okay, so I'm not doing all this thing for you. I'm doing all this for this student. Okay, I'm doing all this thing adding up for this students. Let's add. Let's add. This another. See, let's add. Let's add. Let's add. Let's add. And adding up. Adds up. Adds up. Adds up. Adds up. Adds up. Okay, so adds up. Let's add and adding up. Why I am playing with add? Okay, everyone clear? Is it clear to everyone? Yes or no? So again, this is studying over this is thinking all these concepts and playing with this all these numbers. So you want to play with these numbers? So come and play with the number. Okay, is it clear to everyone? Yes, let's add up. Let's add up, everyone. Yeah, so this is the thing. So I'm erasing all these concepts over here. Okay, so what's adding up? Which one is better? Adding up, adds up. Let's add. Adding up. No, it's easy to tap. Okay, it's easy to find out. Searching is, I think adding up is adds up. Adding up. Which is more good? Can you suggest me? Can anyone suggest me which one is good? Again, this is student thinking what I am talking about. Okay, so which one suits better? Okay, to my this space. Okay, which one suits better for my space? Can anybody tell me which one suits better for my space? Can anyone tell me? Again, this is student thinking what I am talking about. This is student again thinking what I am talking about, but no problem. Okay, come. So adding up, adds up. Let's add. Let's add. Adds up. Adding up. What? Numbers, digits, concepts, calculations in your brain. Yeah, come here, come here. Okay, so I'm talking about. So I played with length and all this. Yeah. So basically, what I'm saying. Okay, FPS system is what? FPS system. So FPS system. So this is FPS system. Binary. Okay, so movies goes on FPS. FPS would launch. This is binary, FPS binary. Okay, binary, FPS binary launched point 2, launched point 2, or 2.0. Yo, 2.0. Is it this both also good? Okay, so movies. Okay, both movies released. Okay, so who is acting? Who is doing acting in this movie? Can you tell me the name of hero of this movies and name of heroine? Now come up here. So FPS is foot, pound and second. Foot, pound and second. Let's play like a villain. Okay. Yo, discuss. So F is what? Foot. Okay. P is what? Pound. And S is what? Second. Can anyone tell me what is foot? Foot is for length. Okay. Is foot is for length. Okay. Is foot is for length. Pound is for mass. And this second is for time. Okay. Tell me. Let's adding up. Let's add adding up. Again, this is student thinking about what's going on here on this whiteboard. What's going here? What we are doing? Can anyone tell me? We are playing the game. On what level? What is the level of my game? Means our game. Sorry. Yeah. What's the level of our game? So let's play the game. Let's play the game. Okay, everyone. Yes, again, this is student thinking what's going on here. Okay, so what I'm saying, there basically two things you need to know. So one is physical quantity. Physical quantity helps to measure the things. Okay, physical quantity helps to measure the things. Can I say accurately, precisely? Okay, one more thing. Accurately and precisely. Okay, accurately and precisely. Okay, accurately and precisely. So this will help us to measure accurately and precisely. Once I'm talking about accurately and precisely, it means if there is no accuracy, there is no precision, then what? Okay, then what? Okay, so what I'm saying, if there is no accuracy, okay, there is no accuracy. And what I'm saying, if there is no precision, then what? If there is no precision, okay, if there is no precision, then what? There is no precision, then what? Okay, then what? Okay,
Again, this student is thinking, this student thinking brain what's going on now. It looks like not good. Okay, so keep it like this. Okay, this is better, this is better. Okay, this is thinking what goes over here, what's they are thinking, what's they are talking. Again, let's add up, adding up, add up. Again, what's repeat. So what's then what? Then what means there is error, there is error. So next thing we need to focus is error. Error is what? Mistake, mistake. Okay, error is what? Variation, variation from what? Real values, variation from what? True values, variation from what? Exact values. Are you getting all this words what I am saying? So error, error is what? Variation, error is what? Variation, error is what? Variation. Variation from what? Variation from what? Can anyone say? Variation from what? Variation from what? Okay, real values. Oh, new words. Okay, real values. Okay, I am writing over here. This is from true values, from true values. Okay, can I say this is from exact values? This is from exact value. Can I say a everyone? And let's add up exact values. Okay, can I say this is from actual values? Actual values, actual values, actual values, actual values. Okay, is this I'm debating the topic? No, this is necessary, obviously 100% necessary, because I have to cover it again. Basic, better do it now. Okay, so why error? Why error? So there are two ways of error. Okay, one is by mistake. Okay, mistakenly we are doing the error. Okay, or by random error. So one is planned. Okay, planned error, or you can say one is random. So what is random error? So basically we can categorize the error reason for error. Okay, this is what reason for error. Okay, so this is what reason for. So what's the reason for error? So basically reason may be random, maybe random. So this may be random, randomly we are doing the things random. Reason may be random, yes or no? Or maybe maybe what can I say? Inaccuracy in what? Device, measuring device. Okay, so problem in measuring device. Okay, so problem in measure fault. Can I say problem is faulty device? Faulty device, we are using faulty device. Okay, so we are using faulty device, even if we are aware, we can't change it. Yes or no? Tell me everyone. Even if we are using faulty device, even we are aware that we should not do like this, we should not like this, then there will be automatically there will be error. Yes or no? So this is main reason. So what's the precautions? What's the precautions? Can anyone explain me? Can anyone explain me? Let's add up this value. Let's add up. Adding up, no, add up is better. No, adds up, add up, add up. Let's add up. Okay, let's see. Let's do experiment. Which one will better now? Which one will suits better? I will use it. You can recommend me. Okay, you can suggest me which one is better. Okay, you can suggest me to find the good name. Okay, you can suggest me to find the name, good name. Am I right to all of you? So again, this is student thinking what's goes on the mind of this student. What goes on minus. I'm talking with this student only. See the my situation. See the my situation. I'm talking to this student. Okay. Sure. Yeah, come up here. So what I'm saying, how we can remove errors. So what's the ways to remove errors? There are two ways to remove errors. Okay. That we can remove the error by two ways. Am I right to all of you? Everyone responding. So how to? So what's the precautions? Can I say this is what precautions? This is what precautions. Exactly. Yes. So how we can do that? What's the precautions? First precautions is that if the error is random, so you should have to careful. You should have to careful. Be care. Okay, be care. Take care. Take care of the things when you are doing experiments, when you are measuring the thing. Okay, so caring is the options. Okay, so caring. So care the things. Okay, take care. Precautions is very important. Care. What's the error for faulty device? So if the device is faulty, resolve the faulty device, or either change the device with replace the device with the new device. Okay, so replace the device. So what's either resolve the things, either resolve the device problems. Okay, either resolve it or change with replace with the new device. Okay, replace with new device. Hey everyone, clear to all of you? Hey, again this is only thinking what's okay, add up to this, adding up, what I'm adding up is also good now. Yeah, so this is, so I talked about errors, I talked about their reasons, I talked about okay the precautions, how we can eliminate the errors. Okay, and I explained about the measurements, what's the importance of measurements, why it is important. So different, and with the I also added some concepts. Okay, like okay MKS systems. Okay, what's
Okay, FPS systems, okay, foot pound second systems, or CGS systems, okay, what is SI systems, okay, and all these things. And with all this we added some new concepts, brainstorming concepts, that's adding a value the better calculation. For the sake of better calculation, I added some mathematical things. Okay, so definitely it will boost your concepts, it will boost your confidence, it will make you easier to calculate the things. I'm ready to all of you. So can we move on now? Hey everyone, respond me. So let's add up. So what's adding up? Add up. Let's add up. But again, I'm using different things. Why I'm saying let's add up? Is it good? Not at all. So why I'm saying is it let's add up? It's not good now. So if not good, the one why am I saying all these things? So again, this is student. So don't focus on me. Focus on this. Hello cameraman. Focus here. Focus here. Okay. Focus on this. And this is student talking about what I do. I don't. Okay. So yeah, so basically I wanted to tell you the physical quantity you understood. Okay, the quantity we are basically using to measure all this daily life issues. Okay, this physically viewable, physically available, physically miserable. Can I say? Oh yo, what words I'm using? Physically miserable. Okay, so this is very good words. I should keep this thing. Okay, physically miserable. Miserable. Okay, physically miserable. Hashtag physically miserable. Clear? Physically miserable. Is it this student again think what goes on here? So let's add up the concepts. So we're adding up, add up. Let's add up the concepts over here. Yes, so basically what I'm saying, so physically miserable means basically I'm saying there are two things: fundamental physical quantity, fundamental physical quantity, fundamental physical quantity, and derived physical quantity. Am I right to all of you? Derived physical quantity, derived physical quantity, derived physical quantity, derived physical. Is it good? Is it good? Hey everyone, is it good? Is it good? Wow, not good at all. Yeah. Anyway, so what's the fundamental quantity? Again, this student think what goes on over here. So let's add up. Adding up. We are adding up. Okay. So I will try all the names. Okay. Adding up, adds up, adding up. Let's add. Okay. Which one will be good? I will keep that one name, but I will use all name. But today onwards only you can see the changes. Okay. Yeah. So what's the fundamental? Fundamental means the physical quantity which do not depend on other physical quantity. Fundamental physical quantity which do not depend on other physical quantity. What does it mean? Means that is independent. They don't care about other units. They don't care about other things. Okay. If I'm talking about length is length only. They don't depend on others. Length is not depending on other physical quantity. Am I right to all of you? So so this is fundamentally independent to other physical quantity. Can I write like this? So fundamentally independent from other physical quantity, Is it right to all of you? So fundamentally independent from other physical quantity. What's the example? Can anyone say example? Length. So length is not dependent on other physical quantity. So can I say length is fundamental physical quantity? Yes or no? Fundamental physical quantity can also say, okay, can we say this one is basic physical quantity? Okay, so this can also be said as okay basic physical quantity, okay. So basic quantity or derived physical quantity is okay. Let's say basic physical quantity. No problem. We can write one more word extra. Okay, no issue at all. So length. Another is what? Length, mass, time. Okay. So basically we have to focus on 7 fundamental quantities. So how many fundamental quantities? Hashtag. How many physical fundamental quantities? 7. So 7 fundamental quantities. So we have to focus on 7 fundamental quantities. Is it clear to all of you? Hey everyone, respond me. So 7 fundamental quantities. Okay, derived. So what's our derived physical quantity? Depends on fundamental quantities. Simple. So depends on fundamental quantities. Okay, so we'll talk it. Okay, again. So I think our time is completed. Okay, time is completed because to process the things our device is not so big, so that we can process so long. So definitely we have to stop it over here. So I will take one more part. I think 2 or 3 parts. So 2 or 3 parts, then we come to this. Definitely I will cover each and everything. I will not give you any single Spanish concepts. Try to cover all the concepts. So yeah, okay. So direct physical quantity depends on fundamental physical quantity. Write it. Important. Okay. So direct depends on fundamental quantity. Can I say depends on
fundamental quantity. So let's say one example only. So speed. Hello. Focus on speed. Hello, hey. So speed up. So let's speed up. Okay, so I'm going to watch movies speed up, or I'm going to make movies speed up. Can you be the part of? You want to be the part of my movies? Okay, definitely you can connect with me. Okay, thank you. Take care.